students, today our topic is active and passive voice, and today we are doing active and passive voice in present tense. Before starting the lesson, please like, share and subscribe my channel. And to use active voice हम कब use करते हैं? Number 1, to make writing clear and more direct. Active voice shows who is doing what, making sentences easier to understand. जब हमें इजीली समझ आ जाता है कि ये काम किसने किया है, the teacher explained the lesson. Number 2, to emphasize the subject, the doer, when the person or thing doing the action is more important. जो काम कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताना, उसके लिए भी हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं. द फायर फाइटर रेस्क्यूड द चाइल्ड. तो the doer of this action is firefighter. Number 3, in instructions, जब हम किसी को instructions देते हैं, turn off the machine. Story telling में भी हम active voice use करते हैं. It keeps the action moving and reader engaged. She opened the door and stepped into the darkness. When to use passive voice? Passive voice हम कब use करते हैं? Number 1, when to use passive voice, when the action is more important than who or what performed the action, or when the actor is unknown or unimportant. जब ये जानना जरूरी नहीं हो कि ये काम किसने किया है. For example, when the actor is unknown, जब हमें पता ही नहीं हो कि ये काम किसने किया है. For example, the window was broken. We don't know who broke it. When the actor is obvious, जब हमें पता हो कि ये काम किसने किया होगा, obvious हो हमें. The building was completed. अब इतना सा हमें समझ आ रहा है, हमें इसमें से समझ आ जाएगा कि ये काम किसने किया है. The building was completed by the construction crew. So construction crew is the doer of this action. It is obvious who completes the building. Then informal or scientific writing में भी we use passive voice. For example, the data were analyzed. अब ये जानना जरूरी नहीं है कि डेटा किसने एनालाइज किया. Now let's see the steps के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करना है. Number 1, we have to identify subject, verb and object. एक सेंटेंस पढ़ के उसमें से हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है और ऑब्जेक्ट ढूंढना है. She writes a letter. So she is the subject, writes is a verb and object is a letter. Number 2, move the object of active sentence to the subject position of passive. अब जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव सेंटेंस का अ लेटर, उस वो जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव सेंटेंस का. नंबर 3, चेंज द वर्ब टू द करेक्ट पैसिव फॉर्म. अब जो इसका वर्ब है राइट्स है उसको हमें चेंज करना है, और पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. एंड नंबर 4, चेंज द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बाय द एजेंट. अब इसका एजेंट जो है जिसने काम किया है उसको चेंज करना है, और उसके साथ हमेशा बाय लगाते हैं. एजेंट कैसे चेंज करते हैं? अगर आई था तो मी बन जाएगा, यू था तो यू बन जाएगा, ही, हिम, शी, हर, वी, अस, दे, देम. Now let's see how to change the active voice into passive into present tense. Simple present tense, subject plus first form of verb plus object. ये active है. अब इसको passive कैसे करेंगे? Object plus is mr plus third form of verb plus by agent. She writes a letter. She writes a letter. This is an active sentence. Now a letter becomes a subject. अब सिंगुलर है, एक लेटर है तो इज आएगा, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी रिटन बाय हर. प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये एक्टिव है. नाउ चेंज इनटू पैसिव. ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय एजेंट. कंटिन्यूस में हमेशा बीइंग आता है, BEING. He is eating an apple. An apple is being eaten by him. Then present perfect में क्या होगा? Subject plus has और have plus third form of verb plus object. अब passive कैसे होगा? Object plus has और have plus been, BEEN, been plus third form of verb plus agent by agent. Perfect for परफेक्ट में हमेशा बीन आता है. दे हैव कंप्लीटेड द टास्क. द टास्क सिंगुलर है, एक टास्क है तो हैज आएगा.
been completed by them. Now let's see some example of present simple tense. She writes a letter. A letter is written by her. Letter is क्यों? क्योंकि letter singular है. They make cakes every day. Cakes बहुत सारे हैं. Cakes are made every Sunday. Then the teacher explained the lesson. Lesson is singular. The lesson is explained by the teacher. He cleans the room. Room again singular. तो is आएगा. The room is cleaned daily. She does not write emails. Emails बहुत सारी हैं तो R आएगा. Emails are not written by her. Number 6. They do not play football on Sundays. फुटबॉल एक गेम है. फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय देम ऑन संडेज. वी डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट. टीवी सिंगुलर है. टीवी इज नॉट वॉच्ड बाय अस एट नाइट. डू यू राइट ईमेल्स एवरी डे? ईमेल्स बहुत सारी हैं. आर ईमेल्स रिटन बाय यू एवरी डे? डज शी कुक डिनर? इज डिनर कुक्ड बाय हर? व्हाट डज शी राइट्स एवरी डे? व्हाट इज रिटन बाय हर? Now let's see how we change active into passive in present continuous tense. She is writing a letter. Continuous में हमेशा being आता है. A letter is being written by her. They are painting the house. The house is being painted by them. We are watching a movie. A movie is being watched by us. The workers are building a bridge. A bridge is being built by workers. She is not writing a letter. A letter is not being written by her. The team is not preparing the report. The report is not being prepared by team. We are not fixing the car. Car singular hai. The car is not being fixed by us. Are they cleaning the classroom? Classroom singular hai to is aayega. Is the classroom being cleaned by them? What is she writing? What is being written by her? When are you submitting the report? When is the report being submitted by? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट बॉक्स में लिखो कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो. ना प्रेजेंट परफेक्ट. परफेक्ट में हमेशा हैज और हैव आता है और बीन लगता है. BEEN बीन इन पैसिव वॉइस. शी हैज रिटन अ पोयम. अ पोयम हैज बीन रिटन बाय हर. दे हैव फिनिश्ड द वर्क. द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय देम. वी हैव सेंट द इनविटेशंस. बहुत सारे इनविटेशंस हैं. The invitations have been sent by us. The manager has approved the request. The request has been approved by the manager. She has not written a letter. A letter has not been written by her. The chef has not cooked the dinner. The dinner has not been cooked by the chef. They have not cleaned the room. The room has not been cleaned by them. Have they finished the work? Has the work been finished by them? Why have you sent the invitations? Why have the invitations been sent by you? Who has finished the work? By whom has the work been finished? By whom has the work been